Welcome viewers to another very special episode of Your Britain. Yes, Your Britain every Monday 5 p.m. UK time only on Kanshi TV, your number one entertainment channel, broadcasting to over 180 countries around the world. Yes, you heard me right, 180 countries are watching this live transmission at this moment. Thank you very much for your kind and continued support as always. And let me also remind you, if you want to advertise your business on Kanshi TV, please do not hesitate to contact the business and the marketing department. And of course, you can contact myself. All my details on Facebook, and of course, you can get access for my details from the TV contact numbers as well. If you want to go live on air, this is a live telecast. The studio line is, as always, is 0121 502 4304. Live call 0300 770 2246. WhatsApp, the best way of getting in contact with your messages and of course any questions that you want to ask in this evening's program, 0776 598 7635. First, my apologies, I couldn't attend last 2 or 3 programs. I was away. Many of you, I've seen that on my Facebook page. I was out of the country for 2 weeks or so. A fantastic break. And I know many of you have missed me. I've had many messages coming through. But nevertheless, we are back now. But this evening's program, a very special program, which I'm sure thousands, in fact, I would say millions of people around the world have been waiting for this when this promo was running. Today we have the one and only, my very respectable, honourable brother, friend, barrister and Councillor Ayub Khan here in the studio with me, and of course I also have Mr. Naib Hussain Mughal Saab, who has been campaigning with Barrister Saab, not just from these elections that have taken place last week or so, but I'm talking about nearly 15 years since they've been together alongside many of the rest of the colleagues as well in the Aston ward and so on. So just before I introduce you formally to my guest, I'm going to just give you a bit of background history about this individual. Obviously first elected in 2003. Yes, 2003 he was first elected for the Aston ward from the Liberal Democrats. Yes, Liberal Democrats is a party that he represents. And then up to 2012, he was playing his role as a councillor for the Aston ward, and from 2008 up to 2012, he was in the cabinet as a cabinet member for Birmingham City Council. Largest, Europe's largest council. To be honest with you, we have many councils from all faiths, from all cultures, from all backgrounds who are representing Birmingham as councillors. But we're very proud to say that not just only he is a councillor, but he's also a barrister, so he's got all the legal experience as well as knowledge. So that's a great bonus to those people that have supported him in these elections took place on the 5th of May 2022. So viewers, very interesting program. I promise you that I've got many questions coming in. In fact, I have questions while on WhatsApp start flowing in straight away. Thank you very much. I can't promise that I will be answering every single call. We only have a limited time, so please do forgive me if I don't answer your calls, but I will definitely make sure that we can answer your questions coming through on WhatsApp. Barrister Saab will try his level best to answer the relevant questions that you may feel you have regarding the Aston ward. In fact, not just the Aston ward, right across Birmingham, because let me remind you, when he was a councillor for almost from 2003 to 2012, which is almost 9-10 years, he represented citizens of Birmingham, not just citizens of Aston, and particularly being in cabinet, you weren't just to be responsible for your residents in Aston, you were responsible for the whole citizens of Birmingham. We're talking 1.2 million approximately. So a big excitement for all of us when he decided to stand for the elections. No one knew till I think it was about 6 weeks before the elections when he initially announced that he will be standing for the elections in Aston. I'm going to leave the rest to you, to Barrister Saab, to answer further questions. So once again, first and foremost, Barrister, welcome to Kanshi TV and welcome to Your Britain, sir. Thank you ever so much. Can I thank you, Shazad, for inviting me onto this live show, and also like to extend my gratitude to Kanshi TV for having our live broadcast transmitted. I think it's important for people across not only the region that we represent, but across the globe to see democratic processes and how and why people decide to come into politics. Barrister, people are absolutely
excited, people are so happy for you. People I know, due to various other sources, through media and various other sources, that people were virtually on your doorstep, knocking your door day and night and wanted you to stand again for the local elections. What is this particular reason that people were so excited and convincing you to stand again for the local elections? I know you've been out of politics for a few years, and normally what happens is when one individual is out of politics, people tend to forget that individual and move on, and you have new faces, new parties, new individuals coming. But in your case, this was completely the opposite. People were knocking on your door day and night and saying, we want Ayub back. What's going on? I think as an individual, you set out your objectives in life. Of course, you have a role to play as a family man. As the prime breadwinner, if you like, you have a role to play in terms of making sure that you're providing for your family. But equally, you live in a particular community. You want to see the community progress. You want to live in a community that has aspirations. And you want to see all of the community succeed in one way or another. And having grown up in Aston, an inner city area which has probably one of the highest deprivations, has poor records of education, it ticks all the boxes in terms of what you would expect to find in a deprived ward. And having come from that ward and grown up in the area, and then succeeding in a profession that is considered by most as probably the most prestigious, career, being a barrister. I think, it sends out a very strong message to the young community that if you put your mind and heart into something, then you can achieve it. But it requires commitment, it requires dedication, and the desire of someone succeeding requires that level of commitment. And so, coming to politics, I think I served the community in 2003, and between 2003 to 2012, I made myself available to the community pretty much every hour of the day, and even into late hours on a lot of days. And I think when I came out of politics, having lost an election in 2012, because we know that the coalition government was something that a lot of people up and down the country didn't like. There were some decisions which the parliamentarians made which had an impact on local elections. I decided to focus on my profession, so I was heavily involved in my profession, spent time with my family, and I think the community generally were really let down by the local councillors, which happened to be Labour politicians. And I think the community felt that their votes were being taken for granted, and the councillors simply didn't do any real work, weren't really present, and the community got to a point where they were extremely frustrated and wanted me to enter the game again, and that was the reason why I decided to stand again. You've just mentioned very briefly people were very upset with the sitting councillors. In this instance, in the Aston ward, we know that there has been councillors there for approximately 40 years, 35, 40 years, winning the elections again and again and again, and taking advantage of those vulnerable residents who kept on voting for them. Of course, obviously, at every election time, different information was passed out, given out, and due to some families and some individuals who were not highly educated, particularly if they were coming from the Indian Asian subcontinent. For that reason, what they were told, they assumed and they believed that this was the accurate information. I mean, so people fell for these politicians, saying that the person that you have challenged, this was an article in Birmingham Evening Mail a couple of days ago, I'm sure you've come across it, Lord Mayor of Birmingham, you swiped the grants in Aston. What more can I say? And in fact, viewers, let me remind you, not just one seat, both seats in Aston were taken by the Liberal Democrats, by Councillor Ayub Khan and our sister Councillor Mumtaz from Aston as well. And this is a big impact, this is a big hit for a sitting Lord Mayor, for a sitting councillor to defeat his seat. Barrister, what would you like to say about that? I think that it's a testimony, not only
in terms of reflecting on how the community perceived the Lord Mayor and his colleague, but it's also a testimony to how the community felt someone who had already served the community back in 2003, as I said, to 2012, I provided a particular level of service. And the community were able to assess and make a comparison and say, well, Ayub, when he was a councillor, was always available. And you got to think about the challenge. This was a Labour politician, and bearing in mind that inner city areas have generally supported the Labour Party. That's something which was very, very common, where they support the Labour Party for whatever reason, and that's changing now. But he had been a councillor for some 41 years, undefeated. Of course. And the current presiding Lord Mayor, the most, that is a very prestigious post in itself. You're the first citizen of Birmingham. And to make him lose as we did demonstrates how passionate the community were of making sure that I was elected, because the margin was substantial. My margin against the Lord Mayor was substantial. And then having Councillor Mumtaz Hussain, who's done a lot of community work but wasn't a councillor and has never been a councillor, never really political, her beating the Lord Mayor was also a testimony to demonstrate that if you do not service the community, if you do not make yourself available to the community, if you do not work for the community will take a turn and have you kicked out. I'm going to read out a few WhatsApp messages. Phone lines are absolutely going crazy. I've got the producer saying, shall we answer the calls? But let me remind you viewers, I've got so many questions here. So what I'm going to do is go through some of the questions first, and then at the end we'll take a few phone calls. Of course, just hold these phone line for me just for a second. Let me just read some of the messages out from you. Naim Saab, thank you very much. Rai Saab, Raja Sohail Saab, sorry, Naim Saab, Arif Saab, and Qari Saab, and a couple of other names that we have. They're saying, Ayub, our next MP. Yes, well, I mean, look, every politician has an aspiration to climb the ladder. Right. And it all comes down to what the national picture is, what the national policies are, whether you can muster the support in the localities which you serve. There are so many factors, and I'm certainly not in a position at the moment to say what the decision will be, because one of the things that's happening in Birmingham, our residents are being, in terms of what the election commission are doing, is they're actually changing the geography. So the ward and constituency, the constituency boundaries will change. And at the moment, they've decided to give out what they feel are the sort of constituencies which should be represented by parliamentarians. So they've given out proposals. Once those proposals have been confirmed, then of course I will make a decision as to which constituency I should challenge, if any at all. Right, just before we move on to Naib Musa, one more final question for you. Yes, viewers, just be very patient with me. I know that the phone lines are extremely busy. Let me just get through some of these questions, and I promise I will answer some of the calls for you. Right, let's just move on slightly. When you were knocking the doors, when we were speaking to people, I mean, your face, particular being in Aston, born and bred in Aston, it doesn't need any introduction, to be honest with you. Everybody knows who Ayub Khan is, the amount of work that you've done for the last 10, 12 years while you were in the cabinet as a councillor. This time round, when you were knocking the doors, what was the response that you were getting? People are eager to hear this. It was. I mean, when you fight election campaigns, people generally from South Asia, they don't have a desire to upset any individual candidate. So the normal response is, you've knocked my door, these are our concerns, and yes, we'll vote for you and we'll support you. And as candidates, it's very difficult to gauge whether or not you are offered a sincere support, or whether it's just simply to get you away from the door. But I can tell you that when I was campaigning
and having the experience of electioneering, I could tell that the people were so pleased that I had decided to stand again, that I was not only given time at the door, I was invited inside, given drinks and savouries, but it was very, very positive and very, very strong. We've had some further messages on WhatsApp, and I think these are the people who are trying to get through the phone lines, and I believe the option for them now is at least let's get through the WhatsApp messages. Sophia from Aston, Zafran Saab, Abid Saab, Zafar Saab, all these people that are WhatsApping us with the messages are saying, Ayub, regardless of what happens, I don't think there will be ever another election where Ayub will defeat ever again in Aston. I think, that is the hope of these people. And I'm grateful for their kind suggestion and for what they believe in. I think, regardless of who comes in. Yeah, I think ultimately, if you can make yourself available for the community, if you serve the community, or you can't make, people understand that you can't please everyone all the time. But what you can do is try your best as an elected representative, and that's what most people want. And as long as you do that, I think there'll always be a support base. Generally speaking, we've just got another 2 messages. Generally speaking, office hours 9 to 5. But I know this, and I'm sure many thousands of people in Aston will know this as well, that there were no times for Ayub Khan. It was 24 hours around the clock. Whether it was funerals, whether it was something to do with some housing issues, I don't know, any sort of issues, it was 24 hours around the clock. And the beauty about why people really appreciate you and really highly respect you was that your phone was on 24 hours, and it was even at 2 o'clock in the morning, you would put your shoes on and you would say, I'll be right there. I think it's important because one of the things that you have to understand is that when you are representing a deprived community, there are enormous amount of needs, and people will call you as and when they can, and you have to be very flexible. And I was very flexible, and I think that's one of the beauties about elections and people going out there to vote. They recognise that someone is prepared to dedicate their time for the community, and that person deserves the support from the community. And I agree with you that there is no time limit when you're elected in Aston. You are available 24 hours a day, 7 days a week, and in fact, you were the first port of call. Before they ring 999, whether it's a police matter or an ambulance matter, or you were the first emergency service. Of course. And we've just had continuous messages are just pouring in. We've got a message from Farhan saying, Ayub Bhai, after hearing the election results, believe me, I even prayed for you on that particular night. This is the love of people who wanted you to succeed in the election. And once again, I respect all supporters, and it wasn't just limited to people in Aston. There were people that were praying, that were supporting across not only Birmingham, but it was almost global. I had calls from South Asia saying, go out there and contacting people in Aston saying, you need to support Ayub, you need to support Ayub, and it was all across Birmingham, and it's a reflection really on how people have been assisted in the past, and not limited just to the ward constituents, but people across the country. I physically assisted people that would travel from London, from Manchester, and you do your best, because that is what a people's person does. You don't distinguish whether you're an electorate or not. You make sure that you can help wherever you have the ability to help, and that's what I did. Ayub, I've got some further questions for you, but just before I do that, I'm going to go on to Naimur Saab for a few minutes. Yeah, sure. Somebody who has worked with you all his life, to be honest with you, living in Aston for over approximately 50, 60 years in Aston, whether it was your first election, whether it was the second election, or whether it's this election that took place now, your ally, to be honest with you, working with you day and night, trustworthy, honesty, loyalty above all, regardless
Going back a couple of years, many people in politics, as you know, when you're in power, many people stick to you. Soon as you, lose that seat or that power, then people obviously look for alternatives and move on. But as for Naib Mughal Sahib, we can clearly say that regardless of power or no power, the loyalty has always been there for you. And inshallah, no doubt, for future generations to come, the loyalty will always be there. There's no two ways about that. I'm sure many people will agree with me on that one. Right, Naib Mughal Sahib, election 2022. You're so happy. I can see the smile on your face. You were excited. You were out from 7 o'clock in the morning, campaigning non-stop till I think 10 o'clock at night, picking people up, dropping people off, standing outside the polling stations with many of your friends and colleagues and so on. You also represent the Ladywood constituency, the Liberal Democrats. So the many other roles that you have within the party. How are you feeling today, sitting next to the champion? First of all, let me thanks to Shahzad Iqbal for your Britons, and the Kanshi TV invite me again. Congratulations to my brothers, Barrister Ayub Khan, to elected again for the local councillors, Aston wards, May 2022. And on behalf of Noor Care Foundation, behalf of Jamia Masjid Gausia, and behalf of British Kashmir Foundations, and behalf of Lib Democrats, Ladywoods. I think it's just not me smiling today. I think whole Aston, maybe whole Birmingham, whole UK is so proud of Barrister Ayub Khan is elected again for councillors for Aston Ward. I think, like we say before, that Barrister Ayub work for all the community, not just for a Pakistani community or Kashmiri community. He works for Bangladeshi community, Indian community, all globally. He works for everybody, and that's the reason he's been elected again. So congratulate him again, and we are so proud of him and so happy. So मैं अपनी तरफ से अपनी नूर केयर फाउंडेशन और जामिया मस्जिद गौसिया और बाकी हमारी लिब डेम की तरफ से मैं बैरिस्टर अयूब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और इन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है। मैं भी इनके साथ रहा हूँ, और हम भी सुबह 7 बजे जैसे साहब ने कहा तो मैं कैंपेनिंग के लिए हम निकले थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें कामयाबी दी, और अयूब को वोट देकर लोगों ने, जो आस्टन के लोग थे जिसमें बांग्लादेशी कम्युनिटी थी, पाकिस्तानी, इंडियन, ऑल कम्युनिटी ने इनको दोबारा इलेक्ट किया है। लेकिन रीज़न है यही इलेक्ट करने का कि बैरिस्टर अयूब 2003 में भी इलेक्ट हुए थे, और 2003 से लेकर 2008 तक और 2012 तक ये कैबिनेट मेंबर भी रहे हैं। और उस दौर में भी बैरिस्टर अयूब ने दिन रात नहीं देखा, डे और नाइट ही वर्क्स फॉर द कम्युनिटी, एंड दैट इज़ द रीज़न दैट पीपल वांट हिम बैक। और इसके साथ ही इन्होंने जब ये हुए थे कैबिनेट मेंबर में थे, तो उस वक्त भी जो भी हमारे मेहमान पाकिस्तान से, इवन हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान से आए थे, चौधरी अब्दुल मजीद साहब आज़ाद कश्मीर के, तो इन्होंने उनको काउंसिल हाउस में बुलाया और दावत इनवाइट दिया। इसी तरीके से और जितने भी कम्युनिटी के लोग थे, बांग्लादेशी कम्युनिटी थी, इंडियन कम्युनिटी थी और पाकिस्तानी कम्युनिटी। और मेरे ख्याल में ये बैरिस्टर अयूब की एक खुसूसी एक प्यार और जो इनका ये सिलसिला है, ये सब के बराबर ये इक्वल सबको देखते हैं, और सब के लिए इन्होंने जितना अर्सा ये काउंसिल में रहे, इन्होंने लोगों का काम किए हैं, दिन रात ये काम करते रहे। तो मैं समझता था कि इस वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने इनको दोबारा इलेक्ट किया है, और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अयूब खान आइंदा भी, जैसे मेरे भाई ने कहा कि एमपी का हमारी ख्वाहिश है, हमारी जो वो इंशाअल्लाह अगले जो एमपी होंगे हम बैरिस्टर अयूब खान होगा। तो अल्लाह ताला इनको और हिम्मत तौफीक दे। और कम्युनिटी के लिए मैंने कहा था, कम्युनिटी के लिए इन्होंने जब ये जितनी देर ये रहे हैं, आप ये किसी से कोई बात छुपी, बहुत से लोग देख रहे हैं, पूरी मीडिया देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है कि इन्होंने दिन रात लोगों को किसी का भी कोई मसला हो तो ये बैरिस्टर अयूब दिन रात। हमारे काउंसलर जो पहले थे, मैं किसी का क्रिटिसाइड नहीं करता हूँ, पहले हमारे पाकिस्तानी काउंसलर इलेक्ट हुए थे आस्टन वार्ड में,
लेकिन 40 साल में 45 साल में उन्होंने कम्युनिटी के लिए कोई काम नहीं किया है। और ये कोई छपी लुकी बात नहीं है, ना मैं किसी की कोई बरखिलाफ़ या किसी के अगेंस्ट बोल रहा हूँ, लेकिन उन्होंने आप आस्टन के लोग और उन्होंने वही लोगों के काम किए हैं जो उनको फ़ायदे देते थे या उनकी कोई उनके पर्सनल उनके जो कम्युनिटी के लिए उन्होंने काम कुछ नहीं किया है। तो उम्मीद है कि बैरिस्टर यूब पहले की तरह जैसे पहले कम्युनिटी के लोगों के काम करते रहे, पहले की तरह इन्होंने जो अपने जितने भी अपनी कम्युनिटी है चाहे कोई भी वो आस्टन के वोट के उनके साथ इसी तरीके से सलूक करेंगे, उनकी जितनी भी हो सकती है उनकी मदद करेंगे एज ए काउंसलर। और हमारे जो मेन इशू हैं कम्युनिटी के वो रबिश के हैं, जो लोग काफ़ी टिपिंग रबिश होता है, डस्टबिन के होते हैं और बाकी स्ट्रीट क्लीनिंग जो होती है उनके लिए बहुत हमारे इशू हैं जो आस्टन में बल्कि पूरी बर्मिंघम इनर सिटी में बहुत प्रॉब्लम है। ये हमें चाहिए कि बैरी साहब इसको हाईलाइट करेंगे और इससे पहले भी ये करते रहे। आपको पता है कि टैक्सी का जो और लोगों को टैक्सी जो ड्राइवर थे उनको काफ़ी अंदर बर्मिंघम सिटी काउंसिल के अंदर जाने कैमरे वगैरह फिट वो भी इन्होंने मूव कराए थे। और इसके साथ इन्होंने बर्मिंघम सिटी काउंसिल में अभी इस वक्त तक करे जो भी इशू है तो बैरिस्टर यूब को लोग बुलाते थे और बर्मिंघम आनबिया उसके लिए उनका जो प्रॉब्लम थे उनको सॉर्ट आउट करते थे। तो मैं समझता हूँ कि मेरे कहने से नहीं है, आप सब लोग आस्टन के और बर्मिंघम के यूके के जितने भी लोग हैं जो बैरिस्टर यूब को जानते हैं, लीगली तौर पर भी एक लीगल साइड में हैं, बैरिस्टर हैं, लेकिन कम्युनिटी के वाले जितनी क्योंकि ये आस्टन में भी पैदा हुए, आस्टन में जवान हुए और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये फैमिली बच्चे हैं और आस्टन में रह रहे हैं और आस्टन के लोगों की जितनी भी इनसे हो सकती है वो ये खिदमत कर रहे हैं। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये आइंदा के लिए भी काम इसी जज्बे से इसी तरीके से करते रहेंगे। तो मैं आपसे फिर दोबारा शहजाद जो जिन्होंने आज हमें दोबारा बुलाया है इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और खुसूसी बैरिस्टर साहब को अपनी तरफ से मुबारकबाद भी पेश और पूरी अपनी आस्टन कम्युनिटी की तरफ से इनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। माशाल्लाह ये थोड़े से टाइम के अंदर इन्होंने काफ़ी चीज़ें हाईलाइट की। अब मैं चाहूँगा कि बैरिस्टर साहब के क्योंकि हमारे जो देखने वाले हैं ना कि वो सिर्फ क्योंकि मेरा अक्सर प्रोग्राम इंग्लिश में होता है आपको तो पता है, लेकिन मैं चाहूँगा कि थोड़ा से अपनी जो हमारी पटवारी मिठड़ी ज़ुबान है ना जब तक इसने गल ना करो फिर मज़ा नहीं आना, प्रोग्राम कंप्लीट नहीं होना। सो इसने हवाले नाल मैं चाहना, लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ दो बातें जो मुगल साहब ने की। एक काउंसिल हाउस जब नाज़रीन में थोड़ा सा आपको ये वाजिया करना चाहता हूँ और बताना भी चाहता हूँ कि जब काउंसिल हाउस में 2003 की बात कर रहे हैं उस वक्त अजान की जो फैसिलिटी थी ये बैरिस्टर अयूब साहब का कारनामा है। और जिस किसी ने भी चाहे वो बच्चा है, जवान है, बूढ़ा है, औरत है, मर्द है, अगर उसकी ख्वाहिश थी कि मैं जाके काउंसिल हाउस देखूँ, वहाँ पे मिलूँ या बैठूँ या वहाँ जाके मुझे कोई थोड़ा सा जो होते हैं ना कि ख्वाहिश होती है कि मैं, तो ये बैरिस्टर साहब ने वो दरवाज़ा खोला था हमारी कम्युनिटी के लिए कि जो भी आएगा यहाँ पे जिसकी मर्ज़ी है वो मुझसे रब्ता करे। और इंशाल्लाह वहाँ पे हमारे लीडर्स भी आए हैं, जिस तरह PM साहब जो पहले आज़ाद कश्मीर के चौधरी अब्दुल मजीद साहब, मुझे अभी भी याद है बैरिस्टर साहब वो प्रोग्राम मैंने होस्ट किया था उस वक्त, लेकिन ये पहली बार हमारे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर आए थे और ये बैरिस्टर अयूब साहब का और जितनी भी इनकी बाकी टीम थी, नायब मुगल साहब का, शराय शौकत साहब का और जितनी भी टीम थी उस वक्त, इन पूरे टीम का जो है ना ये कारनामा था और उस वक्त PM साहब वहाँ पे आए थे। तो ये एक बात, अब मैं ये तो 2-3 बातें इसी तरीके के साथ मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है, अगर मैं यहाँ इनकी जो अचीवमेंट्स अगर उन पे बात करना शुरू कर दूँ वो एक अलग प्रोग्राम इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो बैरिस्टर साहब की अपनी पर्सनल क्रेडिबिलिटी या अचीवमेंट्स है उसके अलावा एक प्रोग्राम सेपरेट इंशाल्लाह मैं आपसे वादा करता हूँ कि बैरिस्टर साहब दोबारा आएंगे। लेकिन आज का जो प्रोग्राम था ये सिर्फ एक मुबारकबाद का प्रोग्राम था, एक विक्ट्री का प्रोग्राम था। और विक्ट्री सिर्फ ना आस्टन के लोगों के लिए बल्कि पूरी बर्मिंघम, पूरे UK के लिए, बल्कि पूरे इंटरनेशनल, जिसे बैरिस्टर साहब ने कहा कि जो हमारे ममालिक बाहर
बाहर लोग जो हमारे दोस्त भाई रहते थे, बहनें रहती थी, उनकी तरफ से भी हम तमाम दोस्तों बहनों भाइयों को ये मुबारकबाद पेश करते। तो अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ बैड साहब के जो इकरामत साहब का अभी मुझे मैसेज आया, अरशद भाई का आया, अबीब भाई का आया और सिस्टर नूर का आया, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि हमारे मसले तो बहुत हैं, जिस तरह मुगल साहब ने कहा फ्यूनरल के भी मसले काफ़ी हैं, अब ये मसला अब तक हल नहीं हुआ है, ठीक है। ये जो इनकी वो स्कैन मशीन थी वगैरह वगैरह, लेकिन स्टिल स्टैंडिंग वेरी इज, ठीक है। इसके अलावा हमारे इकरामत साहब अरशद भाई ने कहा कि टैक्सी का यार हम भी वो सेम लाइसेंस फ़ी देते हैं, हम बस लेन्स में नहीं जा सकते जो हमारे भाई ब्लैक कैब करते हैं। अभी मैंने ये प्रोग्राम कुछ 4-5 महीने जो हमारे वेस्ट मिडलैंड्स के प्राइवेट हायर के जो चेयरमैन हैं उनके साथ मैंने यहाँ पे प्रोग्राम किया था। उन्होंने वादा किया था कि मैं कोई कुछ ना कुछ करूँगा, लेकिन अभी मुझे कोई अपडेट नहीं है कि उन्होंने क्या किया है। लेकिन और कोई करे ना करे, अयूब खान तो इंशाल्लाह ये ज़रूर करेगा। ये लोगों को उम्मीद है अयूब खान पर कि वो करेगा और फिर आपको रिजल्ट भी दिखाएगा। ये नहीं कि बस बात करके पर ठीक है जी 2-3 महीने बाद देखेंगे क्या होगा। इंशाल्लाह आपको रिजल्ट अपनी तरफ से ये पूरी इंशाल्लाह कोशिश करेगा और फिर आपको रिजल्ट देगा। वेदर यू नो सक्सीड्स और नॉट, दैट्स अ सेपरेट इशू, उससे हमें कोई तल्लक नहीं है। मेन थिंग इज दैट ही विल फाइल इट अगेंस्ट एंड से लुक दीज पीपल जो 4,500-5 हज़ार ड्राइवर है वो सेम फीस देते हैं, सेम लाइसेंस देते हैं, दे आर अलाउड टू यूज़ द बस लाइन्स बट द ब्लैक कैब्स आर, सो दैट इज़ टोटली अनफेयर। ये अरशद भाई साहब ने कहा कि प्लीज़ बैरिस्टर साहब को कहें कि हमारी जांच कराएं इस मसले से, ठीक है। और कंजक्शन चार्ज का मसला जो है वो 8 पाउंड जो है अभी भी वो लगा रहे हैं जो हमारा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली लेबर इज़ इन कंट्रोल ऑफ द काउंसिल अगेन, क्योंकि आपके वो नंबर्स नहीं मीट हो सके कोalition के, तो विद देयर बैक इन कंट्रोल। ये वादा ज़रूर था टोरी का और आप लोगों का कि इफ़ यू विन द इलेक्शन एंड यू टेक द काउंसिल एंड यू विल स्क्रैप द कंजक्शन चार्जेस, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई एम श्योर यू विल डिबेट ऑन दैट एंड यू विल सी व्हाट यू कैन पॉसिबली डू ऑन दैट। तो ये तीन चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट थी हमारी कम्युनिटी के लिए, जो लोगों की ख्वाहिशें थी। तो इसके हवाले से बैरिस्टर साहब मैं चाहूँगा कि आप, क्योंकि हमारे पास टाइम भी चंद मिनट है, तो मैं चाहूँगा कि एक पॉइंट पर थोड़ा सा आप इन लोगों को एतमाद में लें और इनसे बात करें। मसलन जिस तक कॉर्नर ने गल की गई वो तो ऐसा है कि कम्युनिटी जी बेशक बुचे बैकग्राउंड जी जी असानी कोशिश इसी या प्रेशर असा कॉर्नर की सर्विस और स्टाफ पर करा, ठीक है, क्योंकि कई बंदे पिछले जदों मैं कौंसल 2012 तो पिछा हटी गया असा, क्योंकि हमारी अपनी प्रोफैशन की भी जरूरत थी। इस लिहाज नाल बंदे तो चलो तुम इलेक्शन आ रही हो तो बंदे रबता फिर भी रखने, क्योंकि उन्हें कि बंदा चाहिए अवेलेबल या बंदा मदद करी सके, और फिर यकीनन वो काफ़ी अपनी तरफों कोशिश करने कौंसलर ना अगर उठा कोई बंदा रबता ना रखा है बाकी कौंसल ना कर फिर मुड़ी तो ज़ाहिर वो फिर उस बंदे को लुचने जो बंदा कम से कम कोशिश करी सका। और यकीन करो या 2012 तो बाद फिर भी जितने भी मामला से एस्टन वार्ड में और एस्टन तो भी बाहर बंदे आने से यूब साहब आया था मदद करो जी, कोशिश करो असली पार्टी जी रिलीज़ नहीं होनी, फिर तुम मेहरबानी करी मदद करो, और फिर मुड़ी तक कॉर्नर की ईमेल लिखना और उन्होंने रबता करना एक रेगुलर चीज़ हमारे से हुई। और लिहाजा मैं 2021 विच कॉर्नर की पोस्ट सप्लाई भी किया असिस्टेंट कॉर्नर, वैसे मैं चलो अपनी कम्यूनिटी जी है उन्हें मदद बंदा कर सकना, चलो शामी बंदा रबता भी करी सकना कोशिश है। और वो एक पोलिटिकल लिहाज नाल माड़ा अपना जाती के सोच है या पोलिटिकल लिहाज नाल वो कोई फॉरवर्ड एप्लीकेशन नहीं गया, और जुनू इलेक्शन करने में वैसा ये इरादा सा या असन ये मामलात है, चलो एक जमात एक बर्मिंघम ने अंदर लेबर पार्टी की हुकूमत है, ठीक है, वो उन्होंने गवर्नमेंट लोकली बन सी फैसला आखिर वो ये कर सके, लेकिन अपोजिशन लिहाज नाल असां ये मामले तुसां हाईलाइट किए उन्हें असां की पूरी असां जोर लासां, ठीक है, रेस करसां काउंसिल चैम्बर डिबेट करसां इसने बारे, क्योंकि तो को बर्मिंघम शहर विच जो 1.2 मिलियन तुसां है या इतनी आबादी है जिस विच असानी जी BME जी है ब्लैक एंड माइनॉरिटी एथनिक है वो तकरीबन मेजॉरिटी है बेशक, या असानी जितने भी काउंसिल टैक्स पेयर है सबसे ज़्यादा है, लिहाजा ये भी सर्विस बर्मिंघम सिटी काउंसिल नहीं है वो इस तरीके होनी चाहिए जिस विच मेजॉरिटी कम्यूनिटी ने ये मामलात है उन्हें की टारगेट की जाए। फिलहाल नहीं, फिलहाल वो जनरल है, और बिल फार्ज हूँ जो बंदे मसन अगर मुसलमान बंदा फोत है उन्होंने ख्वाहिश है बड़ी जल्दी से जल्दी मुड़ी दफन
होर भी कम्यूनिटियां इस तरीके नाल सोचनियां अंग्रेज़ जेह्ड़े क्रिश्चियन ने बिल फर्ज उन्हां नाल इतना जल्दी प्रोग्राम ही नहीं होना वो आखने जी 2 हफ्ते बाद असां फिर मुड़ी दा एक चर्च प्रोग्राम करसां फिर 4 हफ्ते बाद असां दफनासां फिलहाल जी कॉर्नर नी पोजीशन है और सिटी कौंसल नी पोजीशन है या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व अच्छा यानी कि ये पहला बंदा ऐसी उसकी पहले सी कर सकते जबकि एक फैसिलिटी इस किस्म नहीं है जिस तरह मसलन अस्पताल बंदा जाना भावें तुसा उत्थे 6 घंटे टिकने हो तुसा नी बारी अछनी ली हुआ तो अगर मरीज है या दिला ना उसकी पहले तक सन यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व नहीं पॉलिसी होनी चाहिए इस पर अस जुनूब माशाल्लाह काफ़ी तवज्जो करसां और हर कम्यूनिटी ने बेनिफिट वैसा करसां जिस बंदे की बॉडी जल्दी चाहिए उस कम्यूनिटी ने कल्चर रिलीजन ये देखना मसलन सिटी कौंसल की रिस्पेक्ट करना चाहिए और डिलीवर करना चाहिए दूई गल जी तुसां अपनी लाइसेंस नहीं बस लेनी वगैरह ये भी एक आम चीज़ है मसलन तो को प्राइवेट हायर ड्राइवर है उन्होंने एक रोज़ी है हुण अगर ब्लैक कैब ड्राइवर ये बस लेन इस्तेमाल करी सकने उसकी बुनियाद क्या है उसकी बुनियाद ही आई है या इन्ना बंदियां एक अपनी नौकरी पैसे कमाने जॉब पर जॉब तो अगर एक ट्रैफिक फंसे रहन उन्हें कितनी जॉबां चाहनियां कस्टमर भी ये हमारे टैक्सी करने या उन्हें जरूरत है एक जगह पहुँचना और लिहाजा ये प्राइवेट आर इसकी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए इस पर अस तवज्जो भी कर फाइट भी कर जद्दोजहद कर क्योंकि एक वैलिड चीज़ है ना जी या अगर तुसा दिहाड़ी तुसा पीक टाइम एक या 2 जॉबां करी सकते हो लेकिन अगर बस लेन इस्तेमाल करने तुसा 10 जॉबां ही तो एक रोज़ीना मामला हाँ बिल्कुल रोज़ीना मामला और इस इंशाल्लाह पूरी इंशाल्लाह की बैरिस्टर साहब अगले हफ्ते महीने तक 2 महीने तक इंशाल्लाह इस स्टूडियो इंशाल्लाह हाज़र होई तो की अपडेट जरूर कर जिन्हें बंद सवाल सारे किए उस तो बाद कंजक्शन चार्ज वाले फिर मैं महमूद साहब को जुड़ना कंजक्शन चार्ज वाले अबीब साहब और सिस्टर नूर ना जरा मैसेज है कि पीपल आर फेड अप पेइंग £8 फॉर नो पर्टिकुलर रीजन एवर cities have become ghost town. This is a Labour-led council that has destroyed our cities. ये इनका मैसेज था असल हुन लेबर पार्टी जी सी लोकल गवर्नमेंट जी बनती ये इन्हें इंट्रोड्यूस किया जी और इन्हें फिर मुड़ी ता इंप्लीमेंट किया हुण इस विच जितना नुकसान इन सिटियां ने ये अवाम है ना इतना हर बाकी कम्यूनिटियों से नहीं क्योंकि ज़ाहिर है उन लोकल सेंटर ये बंदे ज़्यादा अपने इन सिटी इस्तेमाल करने किसी बंदे ने डीजल गड्डी वो जाई नहीं सकने चार्ज ऐसी कोई बंदा अफोर्ड नहीं करी सकना नवी गड्डी उन्हें की चार्ज एयर क्लियर ए जोन जरा इसना यह मतलब सा या जेड़े मसन इलाके सेंट्रल इन सिटी उन्हें पोल्यूशन घट हुआ बेशक हुण इस विच तब्दीली हुई को नहीं या तो होना ना या कोई क्लियर जोन है जितना भी जितना भी असा बचत करने चाहने से या यानी कि हवा जी है इन सिटियां घट हुआ डबल हुई क्योंकि गड्डियां उत्थे ही छड़ियां और बाईपास हूँ गड्डियां सिटी सेंटर करें वो इन सिटियां ही जानियां और यानी कि एक कोई फायदा नहीं होया बल्कि असा कि 8 पॉइंट पेनल्टी जी है हमारे 2-3 कंस्टिट्यूट ऑलरेडी मिगी हूँ लिखी रहे व्हाट्सएप मैसेज 6-7 हज़ार की बेलिफ परस्यू करने पे और इसने कोशिश मैं करना पे चैलेंज करना लेकिन हुकूमत हूँ लेबर पार्टी नहीं है और असा अपनी तरफों सिर्फ एजेंडा पेश करी सकने एक वॉइस रेज करी सकने स्क्रूटनी विच असा चैलेंज करी सकने लेकिन अल्टीमेटली एक मसलन सियासी फैसला और सियासी फैसला जो जमात कंट्रोल होनी वो इंप्लीमेंट करनी लेकिन असानी कम्यूनिटी की पता होना चाहिए या अगर एक पॉलिसी पेश हुई एक फैसला किया जाना एक जमाती फैसला किया जाना उस जमात की फिर मुड़ी तक तुसा अगर ये चीज़ पसंद नहीं करने हो उस जमात की फिर तुसा डैमेज देना चाहिए इलेक्शन पोलिटिकल डैमेज ही होना ना या कोई पॉलिसी पेश होनी जिस कम्यूनिटी के नुकसान आ बदनसीबी है कि अगर जिला इलेक्शन होया उला सो तक कि फिर भी लोग और ज़्यादा तौर पर मैं देखा कि लोग इस बारी काफ़ी उसमें तब्दीली आई जिससे पहले लोग लेबर की अखी मुट्ठी का वोट देने से मैं समझना कि वह वक्त बदली गया इतने नौजवान बच्चे जो पढ़े लिखे ना वो बिल्कुल पॉलिसीज तकड़े और उस तो बाद जड़ा उन्होंने की बेनीफिट हो सी अगर कुछ पॉलिसीज नाल तो उस वोट देने चंद ऐसे सारे बजुर्ग हैं या जिन्हें आले उन्होंने मैंटेलिटी बनती हुई है बल्कि उन्होंने इस किस्म की मैंटेलिटी बनती हुई 30-40 साल पहले नहीं कि जी असा
जी लेबर इत्थै बुलाया सी लेबर असां की कम्म दित्ता सी ऐ कीता सी ओह् कीता सी ओह् तुसां की बैरिस्टर साहब भी थोड़ा जिहा इशारा देसन कि ओह् पैह्ली लेबर को नहीं रही बैरिस्टर में सना कि थोड़ा जिहा तुसां इसने पर नहीं ये ज़रूरी गल है क्योंकि असां भी बुजुर्ग ते लेबर पार्टी की वोटां देने ना और ऐसे दो चीज़ां असां कम्युनिटी देसी एक लेबर पार्टी की वोट नंबर 2 आदम भट्ट ये दो चीज़ां आदम तो छोड़ दित्ता आदम छोड़ दित्ता लेबर भी छोड़ लेबर पार्टी की भी जेह्ड़ी है क्योंकि तको असानी जेह्ड़ी यंगर जनरेशन है उसकी ज़्यादा शोर आ सोशल मीडिया नाल हुन काफ़ी जेह्ड़ी मैसेज इंस्टेंटेनियस पहुंची जाने कम्युनिटी की और यंग वोटर जिन्होंने माड़े इलेक्शन च मैं सरप्राइज है इतने यंग वोटर लिखते आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट और इस विच यकीनन तब्दीली ऐसी जिस विच जेह्ड़ा यंग वोटर आखसी या एह् नहीं मैं तुसेंगी लेबर की वोट दसां क्योंकि माड़ा प्यो दादा वोट देना है वो आखसन व्हाट हैव यू गॉट टू ऑफर क्या असेंगी देई सकने तुसां दी पॉलिसी इस चीज़ पर क्या है जेह्ड़ा क्लियर एयर जोन क्लीन एयर जोन आ ये असेंगी नुकसान देना इस पर तुसां दी क्या पॉलिसी है इन्हां चीज़ां पर फिर मुड़ी तक तब्दीली ऐसी और ऐसी भी ज़बरदस्त एक जल्दी क्वेश्चन है फिर मैं सबको जुड़ना मैं आना एक सवाल में फार नालो नाल फार उस्मान साहब सारी जी हाँ उस्मान साहब ने सवाल सी ने एक मिनट मनीर साहब अंजम साहब और उस्मान साहब ना मनीर साहब ना ये सी कि 6 महीने पहले अचने ठक्को ठक डोरा भन्ने ठीक है उस तो बाद जरा 3.5 साल तक बंदा नजरी पैना को नहीं असां की मैं समझना कि बैरिस्टर साहब के ठक्को ठक ने तो सिस्टम बिल्कुल तुसां फारग ही कराई उड़िया आस्टनी तो फारग कराई उड़िया ने तो बाकी बर्मिंघम में शक है कि तुसां आराम नाल आस्ता आस्ता लगे हुए हो और दूसरा ये भी असां की दसो कि जेड़े नौजवान लिबडम की या तुसां दी पार्टी की या तुसां की फॉलो करने चाहे उन्हां तक क्या अपॉर्चुनिटीज और प्रायोरिटीज है एक तो यह सवाल है और दूसरा सवाल भी मैं सो कि नाल ही एक करी उन्होंने टाइम की वजह थूं कि सारे को अंजम साहब ना और उस्मान साहब ना सी कि 5,000 पाउंड और बेरियल ने सवाल पर वापस आई गया कि एवरेज कास्ट 5,000 गरीब बंदा कुत्थों दफना है बंदे की 5,500 देता है ये आने कि क्यों इन्हों को साड़ी इन्हों को जान छुड़ाओ तुसां इस लेबर लेड काउंसिल को 5,500 पाउंड ना दे सकने ये दो सवाल सर सो करो फिर मोड़ सको अच्छा ये पहले डोर नॉकिंग नहीं ये तो चलो वैसे ये खत्म हो जासी क्योंकि ऐसा नहीं जिस सोशल मीडिया लिहाज नाल ये कम्युनिटी इन्हां मुंह तो नहीं दसना 3.5 साल नहीं ये तो मसलन ताई तब्दीली है ना अस्टनी भी ताई आई ना और हल्के भी वैसी असा की ये ख्वाहिश है यंग बंदे जमात ज्वाइन करन और लिब डेम पार्टी जी है एक ग्रोइंग पार्टी है जिस विच तो को नेशनली सतह पर भी पिक्चर तकनी पैनी लोकली सतह पर भी तकनी चाहिए एड डेवी वाइद पॉलिटिशियन ये लीडरशिप यानी कि उस दुनिया ने ये ऑपरेशन है उसकी चैलेंज करना यानी कि बिल फ़लस्तीन और इसराइल का मामला उस ओपनली कंडेम किया यानी कि ज़्यादती नहीं होनी चाहिए और हर ऑपरेशन ये नहीं सिर्फ यानी कि फ़लस्तीन एनी वे वी सीन ऑपरेशन लिबडम एक ऐसी जमात है ये इक्वालिटी और फेयरनेस अव्वल रखती नंबर 1 अच्छा और दुई नंबर तुसना ये लिबडम अपॉर्चुनिटीज फॉर यंगस्टर्स इट्स अ ग्रोइंग पार्टी वी वांट टू टेक एज मेनी यंग पीपल एज वी कैन और जदों यंग बंदे असन जमात विच असन वो एक्टिविटी पेश कर सन कम्युनिटियों विच लोगों की मिल सन दिस इज हाउ यू बिल्ड इट एंड आई थिंक वी विल हैव वेरी सक्सेसफुल आउटकम in the next election after 4 years क्योंकि एक बेस बनना लोगों की पता that we don't need to vote for Labour no more. That's it. We have got other choices. We've got other better candidates. यानी कि पढ़े लिखे हुए नौजवान ये make massive difference. Of course. और इस विच असा उन्हें encourage कर साम असानी पार्टी अच्छो और make a difference for your community. दूसरा ये बेरेना का सन तलका once again it comes back to local government. एक Labour पार्टी ने कंट्रोल आ वो budget set करने वो fixed cost set करने ये बेरेने कितने खर्चे और we will obviously challenge that इसके हम issue raise कर सम and we will take it to the council और all we can do is push it लेकिन एजेंडा ये जितने तक पॉलिसी पेश करने ना पास करने once again कम्युनिटी की अगर इस चीज़ की तकलीफ है फिर ये तकलीफ तुसां बैलेट बॉक्स इलेक्शन दिन पर ज़ाहिर करो तुसां कम्युनिटी ने अंदर अपनी कम्युनिटी पेश करो जी ज्यादती है यह भी ज्यादती है लिहाजा केड़ी जमात कंट्रोल विच है फलानी जमात कंट्रोल विच है फिर इस जमात ने अपोजिट तुम बोलो ओके व्यूअर्स जी वो सब जी मैं हाल जो सवाल मैं लिखे वो ही बैरी साहब ने जवाब एक तो क्योंकि चूँकि बैरी साहब ने शुरू किया स्कैन जरा ना जरा बॉडी स्कैन ना तो मेरा ख्याल है उस लिब डैम ने काफ़ी बैरी साहब ने कोशिश ना और बाकी काउंसलर हजरात ने और उस वक्त असा की स्कैन मशीन मिली गई सी जी
और इस वास्ते कि जल्दी हो जाना सी कि भाई स्कैन अगर वेटिंग लिस्ट बहुत लंबा सी लेकिन मेरा ख्याल है वो ट्रांसफ़र की गई या वो वेस्ट ब्राह्मी जी दी गई लेकिन मैं बैरी साहब की फिर रिक्वेस्ट कर सा कि साड़ी बहुत बड़ी डिमांड है कम्यूनिटी नी स्पैशली पाकिस्तान मुसलमान नी कि असां की स्कैन मशीन बर्मिंघम सिटी काउंसिल नी तरफों या आनी चाहिए और दूसरी जी है कास्ट की जी इन्होंने सी ये भी बैरी साहब अगर फरमाई चुके हैं कि कास्ट ना कोई भी है इतराज़ ठासन के जी है चूँकि लेबर नी गवर्नमेंट है बर्मिंघम सिटी काउंसिल तो उसने कास्ट जी है वेरी हाई लोग किस तरह अफोर्ड कर सकते इतनी 5-6,000 पाउंड उन्होंने और तीसरी जोन ने बारे च इन्हें ऑलरेडी की है कि जो भी इंशाल्लाह इशू मेरा बैरी साहब ने कहा कि मैं इशू राइज कर सा जरा 8 पाउंड जरा चार्ज और उस तो बाद वो चार्जिज लाने रहने अगर ना पेमेंट हो सी फाइनली वैसी कि रबिश ने वाले ना मैं बैरी साहब की रिक्वेस्ट कर सा कि बहुत सारे रबिश जरा ना लोग जो बिल्डर वगैरह या जितने भी गलियां या रोडों पर सट्टी जाने जिथे भी मसला है साड़ी प्राइवेट रोड है उत्थे रबिश टन हिसाब सट्टी जाने और हर रोज़ उसने सीसीटीवी अगर बस थैंक यू मैं चाहना कि पिछली दफ़ा जो मैं पुलिस कमेटी सा उसला पुलिस एक गल आनी सी कि वी लुकिंग फॉर ए फंडिंग असा तो कैमरे ला सा कि रबिश और बहुत ज़्यादा बर्मिंघम सिटी काउंसिल की भी खर्चा होना चूँकि फिर लारियाँ भेजने बंदे भेजने खर्चा होना तो मैं बैरी साहब की रिक्वेस्ट कर सा कि अगर ये स्काई सॉरी CCTV अगर हो जान या उस रबिश ना कुछ आस्तन वास्ते और मे बी बाकी एरिया वजह से लेकिन मैं स्पेशली आस्तन वास्ते करना कि रबिश ना बहुत ज़्यादा असा की प्रॉब्लम। अच्छा सिस्टर नाइला ना मैसेज है हमारे को बैरिस्टर साहब ये सारी भैन काफ़ी उन्हें इन डेप्थ मैसेज लिखा लेकिन टाइम नहीं मैं एक तरफ पढ़ा लेकिन उन्हें आख्या प्लीज़ एज कैंसलर यू टू रिड्यूस रेड टेप फॉर प्लानिंग इतना आवाम की तंग करी रहे प्लानिंग डिपार्टमेंट कि मतलब अगर छोटा जहा कम करो कोई भी तो तुम कि कदा प्लानिंग वाले आ जाने कदा इन्फोर्समेंट वाले आई जाने इन्हें एक मजाक बनाई हुई एक जोक बनाई हुई और कई ऐसा जगह न कि जिथे अगर उन्होंने अपनी कोई इंटरस्ट है तो उत्थे तुम जो कि मर्जी करो पावे तुम पूरा एक मतलब जो कि मर्जी तुम बनाई करो चारी करो लेकिन आम बंदे तक इन्हें एक बहुत बड़ी परेशानी की हुई है ए सिस्टर नाइला की तरफों से और ऑल्सो शी सेड कैंसल टैक्स एज वेल कैन यू आस्क ब्रदर अयूब any chances of reducing how उन्होंने मैसेज लम्बा से कहने का मतलब है how the hell can one pay in band A you're talking nearly 1,500-1,600 pound now we're struggling as it is ये दो सवाल ने अगर सिस्टर नाइला की जवाब दियो तो she'll listen No, well, very good questions from Sister Naila. The first one in relation to planning red tape is which yakinan to ko I haven't been a councillor now for 10 years when wapas aayi raha so I need to check and see what the issues are in terms of red tape. I'm more than happy to give Sister Naila my number या email me direct kari sakne or is which you can get my email address of the city council website me ki direct email karna and I'll look into the specific issue that's affecting Naila but in relation to the second matter which you said council tax I know that ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸਨੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ 150 ਪਾਉਂਡ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪੇ ਬੈਕ ਕਰਨੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦ ਹੀਟਿੰਗ and the rise in utility bills gas and electric lekin once again a labor hukumat hai a labor hukumat birmingham city council vich apna budget set karni is council tax वैसे भी freeze होना चाहिए क्योंकि हर बंदा ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਯਾਨੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਤੱਕ ਨੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਿੱਲਾਂ ਗੈਸ ਬਿੱਲ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਖਾਣੇ ਨਾ ਬਿੱਲ ਇਟਸ so high I think there's going to have to be review on it and ਯਕੀਨਨ council also ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੈਟਰ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ with the relevant department अच्छा ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ दो सवाल हमारे को नवाज साहब की तरफों और एक सारे को ज़हीर साहब की तरफों दो सारे को सवाल बैर साहब सारे को सिर्फ चंद मिनट ही ने हमारे को एक मिनट ही है बल्कि मैं चाहना कि तुसा अपना खूबसूरत मैसेज और नवाज साहब तुसा ना मैसेज है कि उन्हें कि मैं इतना फील कंफर्टेबल करना कि इस तो पहले भी असा कौंसलर वास्ते रहे और
आइंदा भी रेसन लेकिन असा बैरिस्टर साहब ना इतना कंफर्टेबली फील करने बल्कि एक ऐसा प्रोग्राम हुआ है जिसका सवाल और जवाब हुआ है जनाब वाला है तो तुसानी रिक्वेस्ट तो बहुत अच्छी है एक तो हमारे भी काफ़ी मुश्किल है बैरिस्टर तो भी काफ़ी मुश्किल हो जासी लेकिन इतना ज़रूर सुना वादा कर साम कि कम से कम अगर साढ़े को 6 हफ्तियां तक 8 हफ्तियां तक बैरिस्टर साहब हमेशा दोबारा अच्छी अपडेट्स की इन्होंने इशुआं पर अगर और कोई सवाल होए तो वो भी इंशाल्लाह सवाल खाई सकने हो तो कोशिश कर सन हर वीक तो मुश्किल है लेकिन once in about 2 months time we will all come back in your Britain and answer many questions and speak to you and see you and keep in contact with you all times so जी तुसां सवाल ना जवाब तो मैं दे ही उड़िया बैरिस्टर साहब 1 मिनट और मैं चाहना कि इस मिनट के अंदर अंदर जरा तुसां खूबसूरत मैटर में वो तुसां जरूर कन्वे करो एक सिर्फ बैरिस्टर साहब जी तुसां पहले फुटबॉल ना आस्टन विला ना बैरिस्टर साहब कुछ तुसां प्लीज़ इस ना भी करना पार्किंग ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी है क्योंकि जेह्ड़े लोकल रेजिडेंट्स उन्होंने वास्ते पार्किंग बड़ी मुश्किल होनी गड्डियां असां कि फिर बहुत गड्डी नहीं पार्किंग पूरे आस्टन फिर अपने डोर अगर नहीं मिली इन्हीं या तो कोई जिस परमानेंट पार्किंग परमानेंट होनी चाहिए जिस बाकी मैं देखा है शहरों या बाकी नहीं इस तरह आस्टन इतना भी आस्टन भी पार्किंग ना परमानेंट होना चाहिए उसने प्लीज़ ठीक है सर 30 seconds for you sir well can I first of all thank you Shazad again and Naib Saab for hosting me on Kanshi TV I'm extremely grateful to all the viewers I thank everyone for their loyalty and support and giving me this opportunity to represent not only the Aston people but as a councillor we are advocates for the whole of Birmingham residents. It's the largest council in Europe and I think by being a councillor I will raise all the matters which people raise because that's what we're there to do and hopefully by me being there there'll be a difference which will benefit all residents of Birmingham. I thank you once again. Thank you very much, Councillor Barrister Ayub Khan. Thank you very much, Naib Mughal Saab, for coming to your Britain Live. Thank you very much for coming on Kanchi TV. As always, you're welcome, sir, on this platform. Anytime, this is your platform. Of course, there's no doubt in that. And inshallah, as far as my respect and obviously credibility, loyalty, I've always been with yourself, and now that will be in the coming future as well. You're doing a great job for the Aston and in fact for Birmingham, I should say. So hopefully we'll get you back on very shortly in the next couple of weeks, months. Till then, love, peace, respect for each and every one of you.